Namaskar. In this lecture on mechanics, I am going to discuss the calculus of variations technique for one very important problem known as Brachistochrone problem. This is a very famous problem of mechanics. What is this Brachistochrone problem? Actually, it is a problem which was posed by Johann Bernoulli in 1696. What he wrote for this problem was that Johann Bernoulli addressed the most brilliant mathematicians in the world. Nothing is more attractive for the intelligent people than an honest, challenging problem whose possible solution will bestow fame and remain as a lasting monument. Following the example set by Pascal and Fermat, etc., I hope to gain the gratitude of the whole scientific community by placing before the finest mathematicians of our time a problem which will test their methods and the strength of their intellect. If someone communicates to me the solution of the proposed problem, I shall publicly declare him worthy of praise. So this was the address with the problem which he posed. And now what was the problem which he posed or for which he asked for the solutions? Given 2 points A and B in a vertical plane, what is the curve traced out by a point acted on only by gravity, which starts at A and reaches B in the shortest time? So what was the problem which he posed was that suppose there are 2 points A and B. A particle starts traveling from A to B and it is traveling under gravity, that means it is in the vertical plane. Then the problem was that what should be the path between A and B covered by that object such that the time of reaching from A to B is least. So this was the problem which was posed by Bernoulli, and he got 5 solutions of it. One was given by Newton, then Jacob Bernoulli, Leibniz, D.L. Hospital, and Johann Bernoulli itself. Because Johann Bernoulli knew its solution, and then he got four more solutions from 4 people. Naturally, all were saying the same thing, but their methods were quite different. And later, Euler and Lagrange used calculus of variation technique, which we are going to discuss in this lecture, to provide that what should be the path. So before going to the mathematics of this problem, you see these 2 pictures. In first picture, one ball is coming through 3 paths. One path is this one, another is this one, and third one is this one. You see, this is the path, this is the path, and this is the path. And you can see that 3 particles are traveling at the same time, falling freely, and if it is following this path, it is coming in the least time. सबसे पहले पहुंच रहा है वो नीचे, तो लीस्ट टाइम यहाँ पर लग रहा है उसको जब वो ये वाला पाथ अडॉप्ट कर रहा है. ठीक है, इसी तरह से आप ये देखें, अगर ये एक YouTube का वीडियो है, देखिए, in this video it is a roller coaster. 3 trains are coming, and you see that when the train is coming from the middle green path, then it is traveling in the least time. Now what is this path? This we will find out with the help of mathematics. So the mathematics involved in this is suppose you are having a point A and a particle is to reach at B. You may take this point to be here also. This is the B point, or you may take it
here, कहीं भी आप ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो. Now a particle is to travel from A to B. Suppose this A is x1 y1 and this is x2 y2. This x1 y1 may be taken as the origin point. Now your problem is to find a way, a path between A to B such that the time taken by the particle is least. So first of all, consider an object traveling from A to B such that it is traveling under gravity. So naturally it is traveling in the vertical plane and there is no friction present. तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है जब वो ट्रेवल कर रहा है. ठीक. Now when the particle starts from A, naturally its velocity is 0. Particle falls from A at 0 velocity. So when it starts moving, naturally when it is at A, then it is possessing the potential energy. But as it is moving, as it starts moving, it will gain the kinetic energy. And by conservation law, the kinetic energy and potential energy will be same. So first of all, if I take this small portion of the path, I have denoted it by ds, then naturally we can write ds is the elementary path along, एक assume कर लिया हमने path, along a path say y is equal to fx between a and b. ठीक है, जो भी पाथ होगा आप उसको एक फंक्शन से ही बताएंगे. सो लेट दैट पाथ बी fx. नाउ द टाइम taken in traveling through ds, कितना टाइम लगेगा उसको? You can say it is dt is equal to ds upon velocity, जो भी velocity होगी, where v is the velocity at an arbitrary point. Right? So what will be the time taken by the particle from traveling in traveling from A to B? Integrate the both sides. Time, मैंने इसको फंक्शन ऑफ y ले लिया, मैं इसको फंक्शन ऑफ x भी ले सकती हूँ. तो हम अभी देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे. टाइम कितना हुआ, इंटीग्रेट कर दें हम इसको ds upon b. And if we are taking it to be the function of y, तो एक्सप्रेशन आपका y में आएगा. I'll take limits for x. और हम इसको बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, हम जैसा ds का एक्सप्रेशन लेंगे कि हमें क्या लेना है. Now calculus of variation technique says that you have to find the extremal of the functional. यहाँ पर जो y है y fx है, तो ये खुद फंक्शन है और t एक और फंक्शन है, टाइम फंक्शन है. एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर ऑपरेट हो रहा है, तो ये क्या बन गया, फंक्शनल. तो सबसे पहले हम कैलकुलस वेरिएशंस में क्या होता है कि हम ये निकालते हैं कि व्हाट इज द इंटीग्रेंड, सो दैट यू कैन यूज द Lagrange Euler equation, right?
तो हमें पहले इसे एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी इंटीग्रल फंक्शन, एंड किसका फंक्शन? फंक्शन ऑफ वाई, वाई डॉट एंड एक्स इफ इट इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और it was function x, x dot y if it was integrated with respect to y। तो हमें कुछ ऐसी फॉर्म लानी है, इस तरह की हमें फॉर्म लानी है अपने इस एक्सप्रेशन की। तो हम v की वैल्यू निकालने के लिए बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। Now, what is the potential energy at some arbitrary point? It is m g y, where m is the mass of the object, g is gravity force, and y is the vertical distance at the point which is the point of consideration. So, mgy is equal to half m v square, because v is the velocity at the arbitrary point. So, वहीं पे हमने v velocity ले लिया और y उसकी vertical distance ले ली। तो यहां से हमारे पास आ गया, दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी वाई, और v इज इक्वल टू रूट ट्वाइस जी वाई। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर v। नाउ वी विल पुट दिस एक्सप्रेशन ऑफ v इन 1। तो ये क्या आ जाएगा 1 में जब हम रखेंगे इसको, t which is a functional operating on a function, or t is a function operating on a function, x1 to x2, this was ds, and here we had v. So in place of v I'll write twice g y। ठीक है, अभी तक हम इस इंटीग्रल को कर रहे हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। now I will write the expression for ds. ds will be dx square plus dy square square root, this is the value of ds, root twice g by x1 to x2, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 1 प्लस y डॉट स्क्वायर अपॉन root twice gy, and this is dx. As I told you earlier that we can take dy common or we can take dx common. डिसाइड कैसे करते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ कि जिससे इजीएस्ट हो जाए हमारी लेग्रांजेस आइलर इक्वेशन, थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाए, इजी फॉर्म में आ जाए, इस तरीके का हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो यदि मैं इसे लिखूं, दिस इज x1 टू x2 फंक्शन ऑफ y, y dot x dx, then comparing the two, what is f, where f y y dash and x is equal to 1 plus y dot square अपॉन, यहाँ पर हम इसको केवल y भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यदि हम रूट 2g लेते भी हैं तो वो एडजस्ट हो जाएगा, तो हम इसको खाली इतना भी ले सकते हैं। जितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, और हमने जब लैग्रांजे आइलर इक्वेशन की थी तो हमने ये बताया था कि इफ इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x देन वी गेट द Beltrami equation, Beltrami identity. So since it is not a function of x, Beltrami identity says f minus y dot delta f delta y dot is equal to कांस्टेंट। ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन हो जाता है। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज रखनी है f की। f यहाँ पर निकल चुका है, तो f की वैल्यूज रखी हमने यहाँ, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर अपॉन रूट y
minus y dot. Now we have to differentiate f with respect to y dot. So it will be y dot upon root 1 plus y dot square and रूट y जो ऑलरेडी है वहाँ पर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको। 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस वाई डॉट स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कैंसिल हो गए दोनों और यहाँ से आ गया 1 upon root 1 plus y dot square is constant, which is very simple. You can square and get y 1 plus y dot square is equal to again some constant. Suppose this constant is d. और इसको आप 1 upon d ले लो और भी सिंपल हो जाएगा और y 1 plus y dot square is equal to d। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। 1 plus y dot square is equal to d upon y dot square is d upon y minus 1 which is d minus y upon y। तो ये y dot square आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकल सॉल्यूशन करें। y dot square is d minus y upon y, so y dot is square root of d minus y upon y. It will be dy dx d minus y upon y. Now y upon d minus y dy is dx. Integrate, you will get integral dx is integral y upon root d minus y dy plus some another constant of integration. अब इसमें सिंपल है, यहाँ तो x आ गया और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कोई सब्स्टिट्यूशन ले लें, लाइक यू कैन टेक y इज इक्वल टू d साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक सब्स्टिट्यूशन ले लें आप और इसको सॉल्व करें। d साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, dy भी चेंज हो जाएगा, dy इज इक्वल टू ट्वाइस d साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 1/2। तो ये आया d साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। y हमने रख दिया और dy की जगह हम रखेंगे d साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, नेचुरली d थीटा होगा यहाँ पर d थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ d माइनस d साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हुआ रूट d साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, ये तो d और d स्क्वायर हो गए, इसको ऐसे लिख लेते हैं d स्क्वायर अपॉन रूट d, देन साइन थीटा बाई 2 cos theta by 2 upon cos theta by 2 d theta. Now you may easily solve it and you will find x is equal to d by 2 theta minus sin theta। इस फॉर्म में आप इसको सॉल्व करके फाइनली ले आइएगा। यहाँ d को हमने रखा था sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये cos थीटा बाई 2 बना और इधर से ट्वाइस d साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 वो हमने यहाँ रखा था,
ठीक है, इसको सॉल्व करके आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, और इसी तरह जब मैं इसे चेंज करूंगी y को, तो y में भी रिटन एज ट्वाइस d साइन स्क्वायर थीटा बाई टू से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सो इट इज d बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक ही आया x इज इक्वल टू, इसे मैं r मान लूं, थीटा माइनस साइन थीटा, और y आया r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या है ये? These are the equations representing the cycloid. तो यहां से ब्रैकिस्टोक्रोन कर्व क्या आया कि जो पाथ है ए से बी के बीच में, वो क्या अडॉप्ट करना चाहिए? पार्टिकल को साइक्लॉइड अडॉप्ट करना चाहिए, तब वो मिनिमम टाइम में पहुंचे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि ये साइक्लॉइड बनता है। अगर हम देखें प्रैक्टिकली, आप देखिए यहाँ पर, ये इस तरह से साइक्लॉइड डिस्क्राइब होता है। यहाँ से एक पार्टिकल चल रहा है, वो पार्टिकल क्या पाथ ट्रेस करता जा रहा है, जब जा रहा है वो पहले फॉल करेगा, जैसे उसको यहाँ तक पहुंचना है तो वो पहले फॉल करेगा, स्पीड गेन करेगा फॉल करते समय, और फिर वापस से वो ऊपर जा रहा है, तभी वो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। ये मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया है। तो जो ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि यदि कोई पार्टिकल under gravity fall करता है without any friction, then it should adopt the cycloid path so that it could reach in minimum time from one point to another point. So this is all about Brachistochrone problem. In next lecture we will see one more application of calculus of variations. Thank you.